नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल में। आज हम डिस्कस करेंगे रतन टाटा वर्सेस साइरस मिस्त्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मैटर को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं शांतनु सिंह। शांतनु इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन दिल्ली. ही अपीयर्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एज वेल एज स्पेशलाइजेज इन टैक्स मैटर्स. वेलकम शांतनु. हाय गौरव. शांतनु, मुद्दे की शुरुआत सीधे रतन टाटा वर्सेस साइरस मिस्त्री वर्सेस रतन टाटा, दो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, दो बिजनेस आइकन्स. ये केस शुरू कहाँ से होता है? गौरव, इस केस की शुरुआत बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 के आने के पहले से हुई थी, पर जो मेजर फैक्चुअल बैकग्राउंड है वो कंपनीज एक्ट 2013 के बाद का है. सो दिसंबर 2012 में व्हेन मिस्टर रतन टाटा रिटायर्ड फ्रॉम टाटा ग्रुप कंपनीज, selection committee was formed and selection committee recommended the name of Mr. Cyrus Mistry as the next chairman. Cyrus Mistry को next chairman के रूप में अपॉइंट किया गया और मिस्टर रतन टाटा को एमिरिटस चेयरमैन की पोजीशन दी गई, जो कि एक एडवाइजरी पोजीशन की तौर पे थी, where he wasn't supposed to, where he wasn't going to get involved in the matters of functioning of the company, but was only there to advise or guide the next management of the company. Correct. So problem तब start हुई when Cyrus Mistry started, because of a different style of management or administration, he started into looking into all the issues of the company, और जो कुछ legacy issues थे where the company was making more losses than in the other businesses that the company was running. He started questioning the practices of the company and started shelving off some of the projects which were very close to the heart of Mr. Ratan Tata, who was the erstwhile chairman. And so पुराने मैनेजमेंट और नए मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस इन फंक्शनिंग और डिफरेंस इन स्टाइल की वजह से जो डिस्प्यूट हुआ, उसकी वजह से ये डिस्प्यूट आज हमारे सामने है. तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हो सकते थे जो रतन टाटा के दिल के करीब थे, लेकिन साइरस मिस्त्री कह रहे थे कि बहुत लॉसेज हैं, कंपनी को प्रॉफिट करना चाहिए, हमें प्रोजेक्ट बंद कर देने चाहिए? एक प्रोजेक्ट जो सबसे पहले मेरे वो ख्याल में आता है वो है टाटा नैनो का प्रोजेक्ट, विच वॉज पोर्ट्रेड एज अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर रतन टाटा. रतन टाटा ने पहले उस प्रोजेक्ट को बंगाल में कैरी आउट करने की कोशिश की थी, वहाँ से शेल्व ऑफ हो गया, फिर गुजरात में लेके गए, बट ही फाइनली केम आउट विद दिस कार विच वॉज सपोज टू बी अ कार फॉर द मिलियंस इन आवर कंट्री who could not have otherwise afforded a car. So this project was very close to his heart, and this project, it was a project that added to the existing goodwill of the Tata Group. So ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ पे टाटा ग्रुप was not doing this for a profit motive. Profit जो इस प्रोजेक्ट से आ रहा था वो बहुत कम था, but it was entirely for building upon the goodwill of the Tata Group. But since this project was considered to be or was appearing to be a loss-making project, Cyrus Mistry wanted to do away with this project. This is just one of the examples. There were other examples also where there was a dispute with regard to the benefits and cost involved in those projects. So यहीं से dispute की शुरुआत होती है. ये dispute की शुरुआत होती है, साइरस मिस्त्री रतन टाटा के कुछ पुराने डिसीजंस पे उंगलियां उठाते हैं, उनकी वायबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं. एंड रिजल्ट ये होता है कि साइरस मिस्त्री को मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन से हाथ धोना पड़ता है. बिल्कुल. और इसके बाद वो केस करते हैं एनसीएलटी में. तो इस जुडिशियल जर्नी के बारे में बताइए कि केस कहाँ कहाँ जा चुका है, अभी किस पोजीशन पे है? ये केस मार्च 2017 में एनसीएलटी के सामने फाइल हुआ था, और दिस केस स्टार्टेड व्हेन ऑन 24 अक्टूबर 2016 साइरस मिस्त्री वाज रिमूव्ड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स लिमिटेड, विच इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द एंटायर टाटा ग्रुप. जो द प्रोसेस विच वॉज फॉलोड, द प्रोसीजर, जिस तरीके से साइरस मिस्त्री को रिमूव किया गया था टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से, दैट वॉज द इशू इन द डिस्प्यूट. It was there before the NCLT. It was raised before the NCLAT also, and it is now going to the Supreme Court. The procedure for removal of Mr. Cyrus Mistry and conversion of Tata Sons Limited from a public company to a private company in a hasty manner, ये जो जल्दी से इन्होंने कंपनी को कन्वर्ट कर दिया from a public company to private company, ये दो major issues थे which were in dispute. So against this Cyrus Mistry, against his removal, Cyrus Mistry through Cyrus Investments Limited, which is a group company of Shapoorji Pallonji Group के 18% shares owns 18% shares in Tata Sons Limited.
being a minority shareholder, but it is still a substantial shareholder in Tata Sons. So Cyrus Investments ने पहला केस फाइल किया था NCLT में, alleging operation on the part of majority shareholders, और उसका the operation for establishing operation, they had claimed that Mr. Cyrus Mistry was removed in a manner which is not mandated by the Companies Act. He was removed in an illegal manner. तो इसको इन्होंने NCLT में चैलेंज किया. जहाँ तक मेरी जानकारी में है, NCLT ने चैलेंज को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्हें एनक्लैट जाना पड़ा था. इस जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे? So NCLT में when they first filed a petition, जब पहली बार NCLT में petition फाइल हुई, तो NCLT refused to entertain the petition because they did not recognize the Shapoorji Pallonji Group as a minority shareholders, because if preference shares, अगर preference shares इनके consider ना किए जाए, तो their shareholding in the Tata Group falls below 9%. Then they went to the NCLAT, National Company Law Appellate Tribunal के सामने उन्होंने argument raise की कि out of the 6,000 crore investment being made in the Tata Group, 1,000 crore has been done by Shapoorji Pallonji Group, and therefore they need to be considered as a minority shareholder. तो minority shareholder के लिए क्या कोई threshold है? Really, the practice is that if you have a shareholding above 10%, you will be considered as a minority shareholder and your petitions will be entertained. All right. So if we count the preference shares of the Shapoorji Pallonji Group, it comes to be 18%. And because they had invested 1,000 crores out of these, they had a substantial investment out of the total investment in Tata Group. They were a minority shareholder. So, वहीं से NCLAT passed a direction to NCLT to entertain their petition, and thereafter their petition. And all this was happening in NCLT Mumbai. Yeah, NCLT Mumbai. So NCLT में केस चला. NCLT में केस रतन टाटा के फेवर में आया, टाटा सन्स के फेवर में आया. एनक्लैट में क्या बदल गया? जो एनक्लैट में प्रोसीडिंग हुई है, उसके लिए देयर वर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स पास्ड इन द एनसीएलटी ऑर्डर. Remarks in favor of Ratan Tata and remarks against questioning the professional and personal integrity of Cyrus Mistry. So this was also one of the major arguments raised by the counsel for Mr. Cyrus Mistry. उनके वकील ने ground raise किया कि these were uncalled for and undesirable remarks passed by NCLT. They questioning the personal and professional integrity of Mr. Cyrus Mistry and extolling the virtues of Mr. Ratan Tata. So these were remarks which were not required into, because issues before the tribunal was strictly legal in nature. So NCLAT के पास जो major issue थे वो whether the acts of the board of directors of the company are such which are oppressive and prejudicial to the interests of a section of the shareholders of the company. This was the major issue, which is basically कि whether there was legal भाषा में अगर बोले whether there was operation of minority shareholders within the Tata Group. Okay. दूसरा क्वेश्चन ये था whether the conversion of Tata Sons Limited from a public company to private company was legal. तो मतलब ये वही दो सवाल ओरिजिनली जो एनसीएलटी के सामने थे कि क्या टाटा ग्रुप ने शपूरजी पलोंजी या साइरस मिस्त्री को ऑप्रेस किया, और जो टाटा सन्स पब्लिक से प्राइवेट कंपनी बनी ये क्या एज पर लॉ था. एक तीसरा सवाल आपने इसमें जोड़ दिया कि जो एनसीएलटी के ऑब्जर्वेशंस थे रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, वेदर एनसीएलटी शुड हैव डन सो. गौरव, इसमें एक छोटा इशू और जो कि पहले सवाल से जुड़ा हुआ है, whether the removal of Mr. Cyrus Mistry was legal in nature. Right. So NCLT का judgment है that removal of Cyrus Mistry was not legal. It is a huge setback to Tata Sons. Yes. They have gone to the Supreme Court. Why are so many petitions being filed for the Supreme Court? Gaurav, if you look at the order of the National Company Law Tribunal, अगर आप उस order को देखेंगे तो उसमें तकरीबन 15-16 पार्टीज हैं. एक पहली पार्टी जो है जो जिन्होंने अपील फाइल की एपेलेंट्स, वो है साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, विच इज़ वन ऑफ द ग्रुप कंपनीज ऑफ शपोरजी पुलौंजी ग्रुप. दे एज द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैव मेड एन अपील टू द एनक्लैट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द एनसीएलटी. उसके बाद देर आर समवेयर अराउंड 15-16 रिस्पॉन्डेंट्स, जिसमें से पहला रिस्पॉन्डेंट टाटा सन्स लिमिटेड विच इज़ द होल्डिंग कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप. और उसके अलावा देर आर अदर रिस्पॉन्डेंट्स, मोस्ट ऑफ whom are directors on the board of directors of Tata Sons Limited, including Mr. Ratan Tata, and there is this other respondent, Mr. Cyrus Mistry is also a respondent in that petition. So all those who feel that they are aggrieved by the decision of NCLAT have filed separate appeals against the NCLAT decision. तो टाटा सन्स तो गई है अपील में, रतन टाटा जी अलग से गए हैं. और रजिस्टर देयर इज अ रिमार्क पास्ड
against the Registrar of Companies Bombay that the conversion of Tata Sons Limited from a public company to private company was carried out in a hasty manner and it was illegal, and they've passed adverse remarks against the Registrar of Companies. So ROC has also gone to the Supreme Court against the order of the NCLAT. तो इसलिए बहुत सारी पार्टीज इसीलिए इतने सारे लोगों ने अपील फाइल किया सुप्रीम कोर्ट. So are we expecting something substantial out of this case? Is going to set a landmark in cases of oppression? What are the final legal points that lawyers need to know? गौरव, जैसा कि टाटा सन्स का मेजर ग्राउंड है दैट देयर इज दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी दैट ऑल डिसीजंस हैव टू बी टेकन बाय मेजॉरिटी. प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन is an exception to the principle of corporate democracy. कि generally सारे decisions will be taken by a majority of shareholders or directors, पर in cases where there is operation, those decisions will not be held to be valid. So this is going to be a landmark judgment or one of the most important judgments on operation and mismanagement and corporate democracy, because Companies Act के अंदर ये पहला ऐसा जजमेंट होगा जो सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है. और अर्लियर कंपनीज एक्ट में दिस पोजीशन वाज क्वाइट सेटल्ड. बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स थे, बट आई थिंक अंडर कंपनीज एक्ट 2013 दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फर्स्ट मेजर जजमेंट्स ऑन ऑपरेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. एंड सिंस टाटा ग्रुप इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स इन द कंट्री, biggest corporate groups in the country, this is going to have a major effect on the investment scenario also. So and how was such a big group being controlled? What is Tata Sons? What is its composition? ये आम जनता कैसे समझे कि टाटा का मालिक कौन है? सो टाटा ग्रुप एंटिटीज की एक पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स लिमिटेड. सो और टाटा सन्स लिमिटेड की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इस तरीके से है कि टाटा ग्रुप कंपनीज के ही टाटा ग्रुप कंपनीज आर द शेयर होल्डर्स ऑफ 81% शेयर्स ऑफ टाटा सन्स लिमिटेड, and the other 18% are being held by Shapoorji Pallonji Group companies, to which Mr. Cyrus Mistry originally belonged. उसके अलावा somewhere around 1-2% और minuscule amount of shares are being held by general public. So अगर आपके पास टाटा का शेयर है, बहुत कीमती शेयर है, फिर भी आपको एक बड़ी पिक्चर ध्यान में रखनी चाहिए कि मेजॉरिटी सारी शेयर होल्डिंग टाटा फैमिली के साथ है, शपूरजी पलोंजी ग्रुप के पास है. आपका सुप्रीम कोर्ट का इस मुद्दे पे फैसला आपके शेयर प्राइसेस को बहुत इफेक्ट करेगा, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट को इंडिया में बहुत इफेक्ट करेगा. जी बिल्कुल. इनफैक्ट अभी एनक्लैट का जो डिसीजन आया उसके बाद ही टाटा ग्रुप के स्टॉक्स इफेक्ट हुए हैं एनक्लैट के डिसीजन की वजह से. और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जितनी जल्दी आ जाता है वो उतना ही बढ़िया होगा. सो हैज टू गेट अ मोर क्लियर पिक्चर अबाउट हाउ दिस होल थिंग नीड्स टू पैन आउट. कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर टाटा ग्रुप. तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जल्द से जल्द आए एंड प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑन दिस इशू. ऑलराइट, थैंक यू सो मच शांतनु फॉर गिविंग सच अ क्लैरिटी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू. आई एम श्योर हम इसको काफ़ी बार कवर करते रहेंगे जैसे जैसे केस में डेवलपमेंट्स होंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट वीक. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग गौरव. थैंक्स.